Jai Hind everyone. This is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to start chapter number 1, Food, Where Does It Come From? खाने का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. Really, food is actually the mouth-watering stuff. You can see in this picture there is a variety of food in this picture. You can see salads, different type of salads. You can see different type of vegetables, cuisines, different type of sweets, different type of vegetables, different type of raitas. Then you can see so many other things like buttermilk, rice, pickle and other things. Mouth watering stuff, that is food. But what is the definition of food according to the science? अगर हम फूड की साइंटिफिक डेफिनेशन जानना चाहें तो उसे क्या कहेंगे? So let us find out. What is food? Food means all the nutritious substance which plants and animals take in order to get energy to survive, to maintain their life. Food का क्या मतलब है? Food means all the nutritious substance. जितने भी nutritious substances होते हैं जिनको कि plant और animal or we can say that all living things they take. अब वो कैसे खाते हैं उसे, कैसे लेते हैं? They can eat if the food is solid or they can drink or absorb if the food is in some liquid form. वो सभी लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को खाते हैं, इसे फूड कहते हैं. लेकिन वो फूड क्यों लेते हैं? इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी टू सर्वाइव. जिंदा रहने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए और अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, इसलिए वो फूड लेते हैं. नाउ फूड वर्सेस फ्यूल. You all know that sometimes we compare food with fuel. But what is the difference and what is the similarity in it? Fuel is used for non-livings like automobiles. For example, petrol or diesel. We used petrol or diesel for a car or a scooter or a truck or an aircraft. You know that कि फ्यूल का जो यूज़ होता है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए होता है और ऑटोमोबाइल्स नॉन लिविंग्स होते हैं. कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल जो हम कार, स्कूटर, ट्रक या एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं. बट फूड इज़ फॉर लिविंग बींग्स. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, ग्रास, न्यूट्रिएंट्स विच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. फ्यूल और फूड दोनों ही एनर्जी गिविंग है. फ्यूल ऑटोमोबाइल्स को एनर्जी देते हैं जबकि फूड लिविंग बींग्स को एनर्जी देते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट फ्यूल इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग वेयर एज फूड इज यूज्ड फॉर लिविंग बींग्स. हाँ, कभी कभी हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं दैट खाना नहीं खाया यानी गाड़ी में पेट्रोल नहीं गया. But actually this is just a local language. Now, why the food is required? This is also a very important question. We all are taking food every day, but why the food is required? Food serves multiple functions in living organism. Food provides us nutrients. We know about different nutrients like energy giving, body building and protective food. फूड क्या करता है? फूड हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है. फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देता है और हम सभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं जो हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं. लाइक एनर्जी गिविंग फूड जो हमारी बॉडी को कोई भी काम करने की एनर्जी देते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं. अगर कोई चोट लग जाए तो उसे रिपेयर करते हैं. हमारी बोन्स, हमारे हेयर, हमारी स्किन एंड अदर ऑर्गन्स को
बिल्ड करने का काम करते हैं. एंड द थर्ड टाइप ऑफ फूड इज प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. सो दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज. ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमको डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी देते हैं. बट व्हाट इज वाइटल एक्टिविटी? Vital activity means all the activities related to the life are called vital activities. हमारी लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट यानी चलना फिरना, मूवमेंट करना, ईटिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, हीलिंग एंड रिपेयरिंग. हमारी बॉडी में ये सभी रिएक्शंस, ये सभी जितने भी फंक्शंस हैं हम करते हैं. ये सभी फंक्शंस जो हैं या ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें कहते हैं वाइटल एक्टिविटीज़. ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इन्हें वाइटल एक्टिविटीज़ कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? दैट we can conclude it that food give us sufficient nutrition to perform all these activities throughout the life. So food is essential to run a successful life. फूड क्या देता है? फूड हमें sufficient nutrition देता है ताकि हम ये सारी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट आवर लाइफ कर सकें, पूरी लाइफ में कर सकें. और इसीलिए एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए फूड एसेंशियल होता है. बट व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स द टोटल यूज ऑफ फूड बाय द लिविंग थिंग्स दैट इनेबल देम टू ग्रो, मेंटेन देयर लाइफ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिपेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब है जो भी फूड हमने खाया उसका टोटल यूज़ हो जाए हमारी बॉडी में, और उसके यूज़ होने से हमारी बॉडी ग्रो करे, लाइफ को प्रॉपरली सक्सेसफुली मेंटेन करे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो, और अगर हमारी बॉडी में कोई चोट लग गई है तो उसे हीलिंग या रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है तो उस प्रोसेस को करे. इसे कहते हैं न्यूट्रिशन. सो हियर व्हाट वी अंडरस्टूड दैट फूड इज एसेंशियल टू रन अ सक्सेसफुल लाइफ. Now, one more thing is there. We all have different choice about the food. Some people like potatoes, some do not like it at all. For example, I like very much to eat pizza. But is it possible for me to eat pizza every time? Or maybe you like to eat jalebi. But is it possible for you to eat jalebi in your every meal? Not at all. Even for a single day, you cannot eat only your favorite food. हम अपनी पूरी लाइफ में बहुत तरह के फूड्स को लेते हैं. A variety of food is available for us and we take different type of food. Why? Let us find it out. Different type of food provides different nutrients and we need different nutrients to perform different vital activities. हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग वैरायटी का फूड जो है वो अवेलेबल है और हर एक फूड के अंदर उसका एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट होता है और ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ की अलग अलग एक्टिविटीज़ को, जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें परफॉर्म कर सकें. सो वी नीड अ वैरायटी ऑफ फूड इन आवर डेली डाइट. और इसीलिए हम एक जैसा खाना नहीं खा सकते हर समय. वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग. वी हैव टू इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड इन आवर daily life. To live a healthy life, we should take a balanced diet. अगर हम healthy life जीना चाहते हैं तो हमें balanced diet लेनी चाहिए. Now, what is balanced diet? Balanced diet, it contains of all the required nutrients in proper amount and ratio. क्या होती है balanced diet? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, it is
a diet which is balanced in all the nutrients. इसमें सभी nutrients proper amount में और proper ratio में available हैं, जैसे carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, और इसके अलावा कुछ amount में water और रफेज जिसको हम डाइजेस्टिबल फाइबर्स भी कहते हैं या ईटेबल फाइबर्स भी कहते हैं, वो भी उसमें प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल, और वी कैन से with different nutrients. अब अभी हमने पढ़ा that when we take different type of food then we get different nutrients. Why? Because different type of food provides different nutrients, and we can understand that all the different food items are made up of different ingredients, and these ingredients are actually nutrients because these provide us nutrients. For example, like chapati. Chapati is made up of wheat flour and water. गेहूं के आटे और पानी से चपाती बनती है. While boiled rice is made up of rice and water. हमने देखा कि चपाती आटा और पानी से बनती है. Boiled rice पानी और चावल से यानी राइस से बनता है. But vegetable curry is made up of different vegetables, salt, spices, oil and water. Now here one thing we should understand कि अलग अलग मटेरियल फूड आइटम जो होते हैं वो अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिलकर बनते हैं, और क्योंकि ये इंग्रेडिएंट जो फूड आइटम्स होते हैं ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें इनसे मिलते हैं. Yeah, here you can see in this picture you can see that a variety of food is there. The first thing here, that is carbohydrate. Bread, rice and some other food stuff is providing us carbohydrate. Whereas here you can see that flesh and some milk product can provide us protein. And fruits and vegetables provide us protective food. Here again we can see that grains, that is carbohydrate or energy giving food. Then here it is plant-based protein. Especially we can say that pulses are plant-based protein. Then vegetables and fruit, that is protective food. And in this picture we can see a variety of food is available in this picture. You can see that here all the nutrients are present in this dish. So finally we can say that chapati, boiled rice and curry, vegetable curry, are different in the nutrients value. अगर चपाती, बॉइल्ड राइस और वेजिटेबल करी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बने हैं तो उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी अलग होगी, मतलब उनमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट है और उनकी वैल्यू भी अलग है. चपाती और बॉइल्ड राइस से जहां हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो वेजिटेबल करी से हमें प्रोटेक्टिव फूड और स्पाइसेस मिलेंगे. सम फूड आइटम्स मे हैव कॉमन इंग्रेडिएंट्स while most of the food items have different ingredients. Means जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे चपाती, बॉइल्ड राइस और वेजिटेबल, इन सभी में वाटर कॉमन है. जबकि हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल करी और पुलाव, अगर हम पुलाव की बात करें तो वेजिटेबल करी और पुलाव में क्या कॉमन होगा, वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स कॉमन हो सकते हैं. चपाती और पराठा की बात करें या पूरी की बात करें तो उसमें क्या कॉमन होगा, दैट इज वाटर एंड व्हीट फ्लावर, आटा कॉमन होगा. सो वी कैन से दैट सम फूड आइटम्स मे हैव कॉमन इंग्रेडिएंट्स बट most of the food items have different ingredients.
that is easy to understand कि boiled rice और vegetable curry इनमें different food items हैं. But the question arises that how do we get these ingredients? But main question क्या है कि हमें ये ingredient मिलते कहाँ से हैं? Do we get all the ingredients from the same source? क्या हमें ये सभी इंग्रेडिएंट सेम सोर्स से मिलते हैं या हमें अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं? लेट अस फाइंड आउट. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. We get all the food materials from two sources, plant source and animal source. आप सभी जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं that we obtain from plant और animal. What are the plant sources? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. For example, grains, pulses, cereals, vegetables, fruits and spices. क्या होते हैं ये? ग्रेन्स मीन्स अनाज, गेहूं, चावल एक्सेट्रा. पल्सेस दैट इज दाल. सीरियल्स भी ग्रेन्स ही हैं जो मोटा धान होता है. वेजिटेबल्स दैट यू नो दिस इज वेरी कॉमन टू यू. देन फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, और जितने भी मसाले हम हमारे खाने में काम में लेते हैं वो सभी हमको प्लांट से मिलते हैं. जबकि एनिमल सोर्सेज आर, कुछ एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स है और फूड मटेरियल है लाइक मिल्क, एग्स, मीट, हनी एक्सेट्रा. यानी हमें कौन कौन सी चीज़ें एनिमल से मिलती हैं? मिल्क हमें मिलता है काऊ, गोट, बफेलो एक्सेट्रा से. एग्स ऑल्सो यू नो, हमें हैन, डक एक्सेट्रा से एग मिलता है. मीट के लिए भी बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है. और हनी हमें हनी बी की हेल्प से मिलता है. सो फ्रेंड्स, हियर वी अंडरस्टूड दैट देयर आर two main sources of food, that is plant source and animal source. And you know that plant source is really very important. Why it is so? Because on the earth, plant is the only producer. Plant ही एकमात्र ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. वो रॉ मटेरियल अर्थ से, सनलाइट से, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं और फिर अपना फूड खुद बनाते हैं. एंड ऑल द अदर लिविंग थिंग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स. We will learn something more and in detail further in this chapter only. But right now, here we should finish this chapter. Let us revise what we have learned today. At first, we saw that food is available in a great variety. Then we try to find out that what is food. We try to find out that what is the definition of food. Then what we saw, that food and fuel both are giving energy, but fuel is used for non-living, whereas food is used for living beings. Then we saw that food is required to perform different vital activities. Vital activities means all the activities related to the life. Then we saw that food is essential to run a successful life, and food gives us sufficient nutrition. And what is the nutrition? Nutrition is the total use of food by the living thing. Then we saw that a variety of food is available for us and we should eat a balanced diet because different type of food provides different nutrients and we need different nutrients to perform different vital activities. Then we try to understand that different food items are made up of different ingredients. Then we saw some food varieties. Then
we try to find out that what are the sources of food material, and what we saw that there are two main sources of food, plant source and animal source. Now, in our next lecture, we will learn in detail that what are the food items which we get from plant and what are the food items which we get from animal. Till then, have a nice day. Jai Hind everyone.